Hello guys, now see here that we are discussing about the continuous function. So in continuous function property is that this is mainly the continuous impulse is what? Whose amplitude is infinite at t equals to 0 and else it's 0. So it's mainly used for approximation of any signal. Like what is approximation? Approximation means a unit area rectangle को हम फंक्शन से हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल जनरेट कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेट मतलब किसी भी सिग्नल से हम स्टैंडर्ड सिग्नल से हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल अप्रोक्सीमेट करने के जनरेट कर सकते हैं. हियर दिस इज अप्रोक्सीमेशन वी हैव डन. Due to some technical fault we are unable to cover, but right now we will just revise this. This is Gaussian function and this is called Gaussian function. ये Gaussian function था, इसको हम अप्रोक्सीमेट किए तो यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से और अप्रोक्सीमेट किए और छोटा हुआ. अप्रोक्सीमेशन मतलब उसको पीसेस वाइज करके हम शॉर्ट करके एक स्ट्रिप निकाल दी. मीन्स एरिया सबका सेम होगा. जैसे कहने का मतलब ये हमारा रेक्टेंगुलर फंक्शन है, हमने रेक्टेंगुलर फंक्शन लिया हूँ यहाँ पे. ओके, वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट द occurrence now see. ओके, नो प्रॉब्लम. सी मतलब कि कोई अगर रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ठीक है ना, तो रेक्टेंगुलर फंक्शन को अगर अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो वो इस तरह आएगा. मतलब रेक्टेंगुलर फंक्शन है, इसका एरिया अगर 1 है, 1 यूनिट है, अप्रोक्सीमेट करने के बाद इसका भी जो एरिया आएगा वो भी 1 ही आ रहा है. फिर उसको और अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इसका भी 1 आएगा. अब एक्सपेरिमेंट करते करते क्या है, मतलब रेक्टेंगुलर सिग्नल से हमने एक इम्पल्स जनरेट कर दिया. रेक्टेंगुलर से एक इम्पल्स जनरेट किया. उस तरह गॉसियन पल्स सिग्नल था हमारा गॉसियन, इसको हमने अप्रोक्सीमेशन में किया तो हमें एक भी फिर अप्रोक्सीमेशन करते गए फिर करने के बाद जो है फिर फाइनली हमें एक क्या मिला, इम्पल्स सिग्नल मिला. मतलब गॉसियन से एक इम्पल्स सिग्नल मिला. वी हैव जनरेटेड. सो अप्रोक्सीमेशन मीन्स a unit area rectangle function we can generate a unit impulse function. ओके, मतलब इसका जो एरिया होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोर्स पर यूनिट इज 1 होता है. ये हम बताया था. हम यहाँ ये बताया था कि अगर माइनस t/2 से लेकर t/2 है, कहने का मतलब अगर इसका जो पीरियड है -2 से t/2 है, अगर अप्रोक्सीमेट किए तो t/4 आ जाएगा, फिर -t/4 आ जाएगा, फिर -t/8 है ना. तो इस तरह जैसे पहले रहेगा -t/2 से लेके t/2 तक, फिर हमने अप्रोक्सीमेट किया t/4 माइनस से लेके प्लस t/4, फिर आएगा -t/8 से लेके फिर माइनस प्लस t/8. इस तरह करते करते वो हमारा 0 पे अप्रोच करेगा तो जो ये है हमारा एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल मिलेगा. यूनिट इम्पल्स सिग्नल मिला. ओके, तो ये चीज़ अप्रोक्सीमेशन है. तो इसका हम प्रॉपर्टी देख रहे थे बेसिकली कि जो इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन from minus infinity to infinity is always unity, that is 1 only. Now it's a even function, that means reversing of signal does not affect the unit impulse signal. Here impulse delta minus t equals to delta t, that is even function only. Okay, now if we write del of delta t equals to 1 by del into del t, it is what? इट इज़ स्केलिंग प्रॉपर्टी. स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, डेल टी लिखेंगे तो 1 बाई डेल्टा डेल टी हो जाएगा. अब एक प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है हमारा. प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर किसी भी फंक्शन को एक्स ऑफ टी है और डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा वैल्यू होगा वो एक्स ऑफ टी नॉट हो जाएगा इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट. ओके, ये हमारा ये बोलता है. हाँ, कहने का ये तात्पर्य है कि अगर साइन एक्स इंटू डेल ऑफ टी माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन वाई इंटू डेल ऑफ टी माइनस वाई. ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी. ये हमारा स्केलिंग प्रॉपर्टी. सो ये हमारा तो एरिया प्रॉपर्टी है हमारा. ये हमारा इवन फंक्शन प्रॉपर्टी है. ये हमारा स्केलिंग है. ये हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है. फाइनली एक है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी, सैम्पलिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सैम्पलिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम सैंपल करते हैं t1 से लेके t2 तक कोई सिग्नल को इम्पल्स फंक्शन के साथ उसका शिफ्टिंग करते हैं, सैंपल करना है dt, तो वैल्यू होगा हमारा होगा xt0 फॉर, इसके लिए xt0 होगा ये हमारा होगा t1 से लेके
t2 तक, मतलब हम बताएंगे ताकि ज़ीरो हो जाए। ठीक, कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का देखिए, कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब है इसलिए हम देखते हैं, कहने का ये मतलब है कि अगर फिर से हम देखेंगे सैम्पलिंग प्रॉपर्टी की, अगर हम इंटीग्रेट किए t1 से लेके t2 तक, इसको कोई सिग्नल है हमारा xt, तो हमारा सैम्पलिंग कराना है हमें t से -t0 dt, तो वो आ जाएगा हमें कितना xt0 वैल्यू आएगी, ये t इक्वल्स टू t0 वाली वैल्यू आ जाएगी इस पर, कब, हाँ कब आएगी, जब t0 की वैल्यू है वो t1 और t2 के बीच में होगा, वरना मीन्स ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो -1 से थ्रू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 3 into t plus t square, ओके, into del of t minus 5। अब देखिए जिस कि ये t2 है here, t इक्वल्स टू +5, लेकिन जो हमारा रेंज है हमारा -1 to 3, लेकिन ये t 5 में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर, 0 हो जाएगा, प्लस t इक्वल्स टू 5 आउटसाइड द रेंज, इसके बीच में आगे नहीं करेगा, तो सिर्फ -1 से, है ना, तो ये ऑफकोर्स 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। सिमिलरली क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखा है कि t1 से t2 इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, डेल्टा इम्पल्स फंक्शन, शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शंस के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो वह आएगा जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम शिफ्टेड, ओके, फॉर विच इफ कंडीशन t1 इज between t1 and t2 its value t0 is lie, then on otherwise 0, so -3 1 to 3 t plus 2, so यहाँ पे हमने देखा t equals to 5 आ रहा है, that is outside this value of -1 and 3, because in this axis what it is 0 and it is -1 is 1 is 2, it is 3, it is 4, it is 5, so our value like between this to this, but it is from this, so it is not, okay. Now see the example 2. Example 2, let's see example that if from 0 to 2 p sine t del of pi by 2 minus t into del t. Here this is the function, okay, this is multiplied by this one, so we can write here this as del of t minus pi by 2, this because it's even function, no? Even function, reversing of signal impulse function does not affect the value, so we can write here it is from the this not equals to pi by 2, है ना, from this equals to pi by 2, so we have to put this value in this, so we will get the function pi by 2 sine pi by 2 into, okay, sine pi by 2 may get, there is nothing but pi by 2 into sine 90 by 2, that means 180, this is pi is 180, so 90 is what, sine pi by 2 is what, it is nothing but pi by 2 on, okay. Now see one function here, third example is that if we integrate from 0 to infinity for cos t into u of t minus 4 into del of t into dt, what will be the answer? Here cos t into u of, see it is, first take this one, this function is ut function is this, and if switch there's t equals to 4 this means this one, so this is the u of t minus 4, if we multiply this one by this one, so result will be 0, so this whole is 0 result, so the answer will be 0. Why? Because shifted of unit impulse function into impulse function, the result is 0, so anything 0 equals to 0 now. So now see another example, 0 to infinity exponential t minus 2 integral of
T minus 6. Okay. We can write from the scaling property that we can write it is as 1 del of 3 common then t minus 2. Okay, we can write 1 by 3 del of t minus 2 we can write. Okay, now see why it is multiply now, it is integration, so 0 to infinity. Okay, and t equals to 2 mainly, 2 equals to 2. Okay, no problem, then means exponential, then it is 1 by 3 exponential 2 minus 2 is what? 1 by 3 sense, because exponential 0 is 1. Okay, from where property from this minus t1 c2 to x t naught into del of t minus t naught is the answer will be x of t. Okay, x of t naught only when x value x t naught is lie between t1 and t2. Okay, so this is my answer, 1 by 3. Now see another question example is that sine of this is what? Sine of impulse of 0 what? Because sine 0 is 0 now. Now again one question example is there. Example is there that if we example is there if sine t into del of t minus pi by t is what? Of course, this is the product rule. Product rule says what? Xt. Product rule says that xt into del of t minus t naught equals to x of t naught into del of t minus t naught. So this is the product rule. Product rules, it says that this. So we can write here, we can shift this value to this one, that means sine pi by 2 into del of t minus pi by 2, and sine pi by 2 is 1 into del of t minus pi by 2. Okay, that is del of t minus pi by 2. Okay, okay, now we will see the unit ramp function now. Now see, basically the ramp function. Okay, what is the ramp function? Its name, it's clear that a function which is just like a ramp slope. Okay, having slope ramp function or ramp signal. So signal is nothing but a function of 2 or 1 variable. So we can see that ramp function or ramp signal. The ramp signal is basically by diagram it is represented by this one. Okay, it is represented by only RT time user. That means its value mathematical, it is by graphical, it is represented like this. This is the ramp function. Okay, the slope basically, ramp is nothing but slope. Okay, and it is represented by nothing but RT equals to t or slope for t greater than 0, and slope is 0 for all the value less than 0. T greater than 0, distance for 0, so that is t is the so that is, you know that if we integrate this one, if we integrate this one, integrate means summation. So many ramps in integrate if we do this one, whatever basically. Poly function. No, sorry. No, what we have said that. Now, if we differentiate this one, if we just break this into some small parts of pieces, we will get what? This will get your and this function. And this function. This is a unit function. If again, if we break down do the differentiation of the unit signal, we get the impulse.
first this one, and again differentiation of u of t with respect to ds. Nothing but impulse function. So we can also write it. So we can write d square r by t by dt square is nothing but u of. Okay, this is property. This is also one property. This is also one property. Or we can also say that integration of del of t dt is nothing but u of t. Integration of u of t into dt is the r of t. And say that dou integration of del of t to dt is nothing but r of. Say this way, okay? What we have concluded that for this signal r of okay, if we refresh this is going to get this one, okay, and finally we will get this one. So it is represented mainly by RT, it is again for differentiation, it is represented by R of del of t, it is by R of, okay. One interesting thing, just I would like to say that about the unit function. Unit function is that we have written u is equals to 1 by 2 not 0 by to make a single function directly u2 minus 1. So you know for the unit step function, so this is like this. And this is the value of 10 to the power minus then is small. Similarly, if we do the differentiation unit, something like this. Something like this. Now see the singular function. What is basically a singular function? Singular function is a function, singularity. Singularity function is a function which are having now higher derivatives. इसका derivatives higher नहीं है, that is called singular function. इसका triangular function function. तो ऐसा function which are not having higher derivatives are called singular function. Singular triangular function हम रैंक कोऑर्डिनेट्स लिखकर बनाते हैं. तो single function which are not having higher derivatives is called singular function. So triangular function we have also two are in width and area. Area on the one point because practically this function is the triangular function. Okay, now see this is the triangular function. So what is singularity function? Function which are not having higher derivatives. Function which are not having higher derivatives is called a singular function, okay, just like a triangular function, okay. Now see the triangular function basically. Next is triangular function basically which is triangular in shape, okay. Here it is from -1 to 1, that means area is 1 and it is 2, okay. Now see signal function. Signal function is a function which is represented by s and written by s, and the signal function is actually like this one. That means signal function, value of signal function will be 1 for all the value of t greater than 0 is 1, minus 1 for all the value of less than 0. Okay? This is for this one. Okay. Now, how we can write this in terms of the unit function? So let us see an example. This is basically u of t. So and this is u of minus t.
Okay. So what we have concluded that u of t plus inverse of u of minus t is equals to 1. And we know that signal function is what? Signal function is u of t, because it is u of t and it is minus u of minus t, minus u of minus t. Okay. We can write this one as what? If we take this one, u of t minus 1 equals to u of minus t. Okay. Then we can write 2 u of t minus 1 is nothing but signal function. Okay. 2 of t is nothing but a signal function. Any problem? I think you will not feel any problem. This is what? This is u of t, okay? And this is u of minus t, okay? And this is minus u of minus t, okay? So we have add this one with this one, okay? We get 3ut minus 1, okay? Now see, okay, to fulfill this condition, we are writing u is 0 equals to 1 by 2. To fulfill the condition of sigma, we take u at 0 equals to 1 by 2. Okay. Now we will just go through the various exponential signal. Okay, now see, next one is the exponential signal. Exponential signal. So there are basically three types of exponential signal. First one is the real exponential signal. Real exponential signal. Okay. Second one is the complex. The exponential is complex sinusoid function. Third one is the complex exponential. Okay. We will discuss step by step all these signal. It's very interesting, man. Like a real exponential signal is what? Where you will not find any imaginary terms. No imaginary term. Okay. That means exponential minus 2t. Exponential 2t. This is like this. If you put exponential minus 2 into 0 is 1. Exponential minus 2. Something less than, its value is less than 1, exponential minus 4, so it is, the graph will be like this. Exponential minus 2t. Okay. If we write here, it's decreasing now, decreasing, value is decreasing. Value decreasing. We write exponential 2t, it's increment. It is decrement. Consider like this. Maybe? Okay. Now complex sinusoid means here we have having the form like a plus minus j omega naught. Like for a Fourier and Fourier transform. That means any mathematical operations on complex exponential. Okay, see, जो इस फॉर्म में होगा Fourier series Fourier transform यूज करते हैं. कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कैसा होगा? यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल ऑफ t इसको b ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल मतलब e के पावर st में रहेगा. कैसा रहेगा फॉर्म? e st. मतलब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पे करते हैं और इनटू पावर आउटपुट फॉर्म में आता है तो इसको बोलते हैं आइजन फंक्शंस. आइजन फंक्शंस क्या होता है? अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं एनी ऑपरेशन ऑन एनी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल एंड आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट, देन इट्स कॉल्ड आइजन फंक्शन. तो हमारा यहाँ पे जे ओमेगा है ओनली इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे रियल प्लस इमेजिनरी दोनों. यहाँ पे जो बन रहा है हमारा सिर्फ रियल पार्ट बनेगा, यहाँ हमारा इमेजिनरी बनेगा, यहाँ पे हमारा ग्रोथ बनेगा. तो ये
this like this. यहाँ से रिवर्स इमेजनरी दोनों लगेगा। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं कि जो डिराइव किया गया है वो समझने में आप लोग को विल गेट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द दिस। सी अगर हमारा कोई सिग्नल है u ऑफ cos t कैसे निकालेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए हम करते हैं u ऑफ देखिए u ऑफ t क्या होता है, इसकी u ऑफ t होता है ये होता है, और u ऑफ cos t क्या होता है, cos 0 पे क्या होता है हमारा वैल्यू cos 0 मैक्सिमम होता है लाइक दिस। तो ये कैसा आएगा हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आएगा 1 कब आएगा, 1 हमारा कब आएगा जब हमारा cos t की वैल्यू ग्रेटर आएगा 0 से बड़ा ना, 0 से बड़ा है cos t की वैल्यू 1 आएगा ना इस केस में, 0 आएगा जब cos t लेस देन 0 होगा। आने का मतलब कुछ इस तरह है। लगता जाएगा cos t इस तरह, ठीक है। सिमिलरली हम बात किया जाए कैसा होगा, देखिए सिग्नम cos t है तो सिग्नम कैसा फंक्शन होता है हमारा, इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर एंड t इज ग्रेटर देन 1 एंड -1 इज फॉर लेस देन 0। ओके तो देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। इसकी सिग्नम फंक्शन होता है हमारा ऐसा फंक्शन जो 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 जहाँ पे हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरह होता है ना। सिग्नल फंक्शन क्या होता है, सिग्नल फंक्शन का जो चीज़ है वो वैल्यू 1 होगा कब होगा तो t ग्रेटर देन 0, जब -1 होगा t लेस देन 0, फिर इस तरह। तो सिग्नल cos t की वैल्यू 1 कब होगी, 1 कब होगा, 1 कब होगा, अच्छा cos t की ऐसा होता है। अगर हम जरा मल्टीप्लाई करते हैं कैसा होगा कुछ, है ना इस तरह होगा, मतलब 1 कब होगा, इसकी वैल्यू 1 कब हो रहा है, 1 कब हो रहा है बताइए, जब हम सिग्नल फंक्शन को cos t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कब होगा, 1 कब होगा जब 1 ये होगा, मतलब जो cos t की वैल्यू 0 होगा ना, मैं ही देखो cos t की वैल्यू हमारा 0 से बड़ा है, देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा cos t की वैल्यू हमारी 0 से बड़ा है, तो हमें 1 देगा वरना 0 देगा, तो cos t हमारा -1 देगा ना, -1 तो ये देगा, ये कब देगा तो लेस देन 0 रहेगा नीचे। ओके क्लियरिटी नहीं है, अच्छा चलो मैं एक सवाल और करता हूँ कि इसको देखता हूँ, अगर डेल ऑफ cos t हमारा 1 कब आएगा, ठीक है दूसरा फंक्शन ये हमारा 1 रहेगा कब फॉर cos t इक्वल्स टू 0 रहेगा फॉर cos क्यों डेल ऑफ t फंक्शन जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर t ग्रेटर टू 0 एंड 0 होती है फॉर cos x इस तरह हम हम देखेंगे। अच्छा हम इस तरह भी कर सकते हैं ना,
what हम del of sin t की वैल्यू क्या होगी, sin t की वैल्यू 1 होगी for what, for 1 sin की वैल्यू 0 होगी, है ना, 0 होगी, 0 होगी for x कुछ भी वो 0 नहीं होगा। Similarly अगर हम सिग्नम को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हम 5वां नंबर में सिग्नम फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं साइन ऑफ टी से तो क्या होगा, इसकी वजह हमें 1 कब मिलेगी, देख लेते हैं 1 जब इसकी वैल्यू 1 से 0 से बड़ा है ना, जब साइन टी की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, -1 कब मिलेगा जब, ओके नाउ सी बेसिकली अब हम देखेंगे डिस्क्रीट में, हम लोग कंटिन्यूस में देख लिए हैं। नाउ विल सी थ्रू द वेरियस स्टैंडर्ड सिग्नल व्हिच आई ऑलरेडी डिस्कस नाउ इन द डिस्क्रीट फॉर्म। द फर्स्ट, अच्छा एक सवाल बचा हुआ था, इंटरेस्टिंग सवाल है तो वो भी हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर y ऑफ t इक्वल्स टू शिफ्टेड इन टाइम टेबल 1 माइनस ई मॉडुलस t दिया हुआ है इनटू सिग्नल फंक्शन, भाई इंटरेस्टिंग बना सकती है उसी के थ्रू तो इसको निकालना है कि इसका रिजल्ट क्या है। तो पहले हम बेसिकली से समझें पहले इस चीज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, y माइनस t इज व्हाट, वी कैन राइट दिस वन एज u ऑफ 1 माइनस t, that is u of 1 plus t, or u of 1 minus plus t, that is u of 1 minus t। ओके, अब ये दोनों से क्या अंदाज़ा होता है कि ये हमारा यूनिटी सिग्नल है u of t। ओके, now if we add this one plus minus means पहले यहाँ here t equals to 1। वन है, इसका क्या मतलब है, 1 plus t equals मीन्स t में एक ऐड करना, t equals to -1 is t equals to 1, t में एक ऐड कर दूँ तो 1 minus t equals तो कुछ इस तरह होगा। इसमें अगर हम सिग्नल फंक्शन की बात करें +1 -1, इसका जो रिजल्ट जो होगा कैसा होगा, रिजल्ट जो है इसमें होगा +1 होगा, that means u of equals to 1 for what, 1 minus 1 plus t is greater than 0, this is 1, and for minus 1 for minus, okay। Similarly एक और क्वेश्चन है,